know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 19th July, that is Wednesday. Aaj Wednesday 19th July hai, and we are here with the Hindu analysis of 19th July. So if I am audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. Meri awaaz aa rahi hai. So this is the main article. This article is actually talking about opposition team India to take on NDA in Lok Sabha polls. Okay, we'll not be going very much in detail because it is a political article, but yes, some basic idea should be there. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. Okay, I hope you are aware. These are actually the alliance name. Alliance आप समझते हो? Alliance means when political parties come together, right? When political parties come together, है ना, to fight elections jointly, that's called as alliance. ठीक है? Okay. Now, तो आपको पता होगा, so BJP led alliance is called as NDA. ठीक है? National Democratic Alliance. Democratic Alliance. Okay. So which includes BJP and its other allied partners. Okay. So similarly, now the Congress-led alliance, you can say, one of the main party would be Congress, Indian National Congress. INC means Indian National Congress led alliance. So they have named it as India. Okay. Okay. Achha, question hai. Can you please tell me, when Manmohan Singh was ruling from, was the Prime Minister from 2004 to 2014, what was the name of the alliance? What was the name of Congress-led alliance? उस वक्त क्या नाम था? कोई बता सकता है? Anyone? I am waiting for that. Okay, तो ये जो अभी कांग्रेस ने coin किया है, means Congress-led alliance have used this word India, and they are calling it INDIA, which means according to them Indian National Developmental Inclusive Alliance. Just have an idea. Okay, so this is the full form of India. Yes, United Progressive Alliance. Very good. तो जब 2004 से 2014 तक, when Manmohan Singh was the Prime Minister, that alliance was called as UPA, United Progressive Alliance. United Progressive Alliance. Okay, that is what you should be knowing it. ठीक है? Yes. And now, yes, BJP led alliance को हमेशा से शुरू से ही NDA कहते हैं, National Democratic Alliance, and now they have named it as India, which actually yesterday it happened in Bengaluru summit. I mean, in the Bengaluru meeting, they actually gave the idea of this or coined this name, है ना? So these are actually the 26 parties are actually the part of it. India coalition या India alliance के 26 parties are there. In fact, 7 chief ministers also were there in that meeting. So you can see these are the chief minister of West Bengal, Delhi, Punjab, Jharkhand, Karnataka, Tamil Nadu, Bihar. So 7 chief ministers were also attending that summit or meeting. Okay, just have an idea about it. So these are the 26 party opposition alliance to be called as India, and these are the famous leaders of it. That ठीक है? So just have an idea about it. ठीक है? Okay, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना इसमें, बट हाँ बेसिक some basic idea should be there, है ना? So this is the name, Indian Developmental Inclusive Alliance. ये आपको नाम याद रखना होगा. And the opposition, I mean the BJP's alliance is NDA, National Democratic Alliance. Okay, so I mean there will be, you can say something like this, NDA versus India alliance. So this will be the election in 2024 Lok Sabha election. Okay, which is going to happen next year. Okay, please write in the live chat, how many seats are there in Lok Sabha? How many seats are there in Lok Sabha right now? And maximum number of seats that can be there in Lok Sabha. Maximum number of seats possible in Lok Sabha. बताइए. I am waiting for both the answers. Yes, the purpose of meeting was, yes, mainly to form an alliance, Manu Punia, you can say. Huh? So, how many seats are there in Lok Sabha? People are saying 545. Are you sure? देखो, अब दूसरे का कॉपी करके नहीं आंसर करो. अगर हो सकता है दूसरा गलत भी हो सकता है, इसीलिए यू थिंक योर ओन एंड आंसर इट. ठीक है? हाँ,
देखो मैक्सिमम अब 552 पहले था, लेकिन अब चूंकि दो वो वाले नहीं होते, AI I mean Anglo Indian is no more, so you can say 550 is maximum and 543 is actually the Lok Sabha seats. जो दो आप 545 बता रहे हो ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ टू एंग्लो इंडियन, ये 2019 में खत्म कर दिया गया है. So in January 2019 this concept is gone. So now we have only 543 seats. There is no nomination, two nomination of Anglo Indian is, this concept is no more valid now. So we have 543 seats. ठीक है, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 530 स्टेट्स में होता था, 20 यूनियन टेरिटरी, मतलब 550 कैन बी द मैक्सिमम. पहले 550 + 2 552 लिखा था, but now this 2 is no more, so we can say that maximum number of seats possible is 550, and right now we are having 543 seats. ठीक है, वही 543 इलेक्टेड, एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है. So be careful about that. ठीक है. So if you are having 543, how much you need to have your own prime minister? If a party wants to have its prime minister, the party should have 543 divided by 2 is 271.5, है ना. So it means any political party or any alliance need 272 seats. आधा तो नहीं होता है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है ना. So I mean any political party or the political party with alliance should have minimum 272 Lok Sabha MPs to ensure their government in center or central government, or you can say their prime minister. ठीक है, 272 सीटें चाहिए, not 271, 272 चाहिए. ठीक है, हाफ मार्क जो है ना क्रॉस करना चाहिए. ठीक है, yes, it should cross the 272, जो हाफ क्रॉस कर जाएगा, है ना. Yes. Now there's a question for you. Former Chief Minister of Kerala dash passed away recently. What is the answer? Your options are Pinarayi Vijayan, Mr. Pinarayi Vijayan, Mr. Oman Chandy, Mr. A.K. Antony, Mr. K. Karunakaran. Actually, all four have been the chief minister. कभी ना कभी वो chief minister रहे हैं. ये चारों जो है चाहे तो present में या past में chief minister of Kerala रहे हैं. So, in fact, A.K. Antony was once the defense minister of India also when Manmohan Singh was the prime minister. Yes, the right answer is Mr. Oman Chandy. And who is Pinarayi Vijayan? He is current chief minister. And before him, इनसे पहले ये थे. Before him, the chief minister was Mr. Oman Chandy. Yes, B is the right answer. Gauri, Jagriti, Manu, Rashmikant, Vivek, Priya, Aditya, Seema, Shamista, Eram, you all are right. Mr. Oman Chandy, he died actually, कल ही से न्यूज में आ रहा था ये. The death of former Kerala chief minister was announced by his son on a Facebook post. He died at the age of 79. So just have an idea about it. Go and find out with which political party he belonged to, कौन से political party थे, ये सब find out करना. ठीक है, it's a homework. Okay, let's move on to India, France, and what keeps their ties tickling and all. So this we will be discussing it. But before that, there's a question for you. Gujarat Doctrine is famous in context of what? Your options are fighting terrorism, international relations, free trade agreement, cricket board agreement. Your time starts now. बताइए. Gujarat Doctrine क्या चीज के लिए famous है? Because I mean in the editorial, the author has used this term, Gujarat Doctrine. So that is why I'm asking. बताइए. If you have read, I think school books में भी पढ़ाया जाता है ना, Gujarat Doctrine and all. Yes, Iram Sheikh, Priya, Gauri, Rashmikant, yes, you all are right. क्या है, कोई बता सकता है? Some basic crux about Gujarat Doctrine. Can anyone tell me? Yes, B is the right answer. Jagriti, Shamistha, you all are right. B is the right answer to this question. Okay, before moving on, guys, this is our paid course. We are running even the crash course also. Hardly 4-5 months is left. You should go for this course. 300 plus recording videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests are there. If you have any question, call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो. Okay? Yes, there are 5 principles. Yes, Gauri. What are those? अच्छा, एक चीज और है कि you can get access to 3-day free trial also. Okay? So just a link is given in the description, or you can download our app, go to CLAT section and you will get the access of 3-day paid class का 3-day benefit मिल जाएगा आपको. ठीक है? Free class. Okay? 3-day free trial you can say. Okay. Foreign relation with immediate neighbors. Yes, Manu, Gauri, you all are right. हाँ. तो actually Gujarat Doctrine थोड़ा सा हम discuss कर लेंगे. India, France and what it keeps their ties ticking. So it has been written by Suhasini Haidar, world affairs journalist from The Hindu.
So she has written, in 1998, India put France in what it should have been a tough spot. Just a few months after French President Jacques Chirac had been the chief guest at Republic Day parade and PM 𝗖𝗂𝗙𝗵𝗏 signed India's first ever strategic partnership with him, newly elected Prime Minister announced the nuclear test पोखरान 2. ठीक है, अब चूंकि हम लोग यहाँ पे 𝗖𝗂𝗙𝗵𝗏 की थोड़ा सा बात कर रहे हैं, so let's learn something about 𝗖𝗂𝗙𝗵𝗏. He was actually earlier the foreign minister, 96 and 97, when Mr. 𝗟𝗄𝗙𝗵𝗏 was the prime minister. ठीक है, and later on 𝗖𝗂𝗙𝗵𝗏 also became the prime minister of India. अब देख सकते हो ये इस टाइम पर फॉरेन मिनिस्टर थे. So when he was foreign minister, he gave the idea of गुजराल doctrine. ठीक है, okay, and then he later became the prime minister also. So when he was foreign minister, he gave this idea. हाँ, तो उसमें क्या है, देखो 5 प्रिंसिपल्स है. So the first principle says, एक्चुअली हम लोग कहते हैं नॉन रेसिप्रोसिटी, यही मेन है प्रिंसिपल, जो नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल विथ नेबर्स. ठीक है, विथ द क्लोजेस्ट नेबर्स. हाँ, बट एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान. चाइना पाकिस्तान इसमें नहीं था. ठीक है, एंड यू कैन से म्यांमार भी नहीं था. देखो अब बताता हूँ. सो बेसिकली द भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के लिए इंप्लीमेंटेड था. सो इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के लिए ये था इंप्लीमेंटेड. So not for Pakistan, China or Myanmar. Okay. So what is it? India does not seek reciprocity but offers and accommodates what it can do in good faith and trust. मतलब for example, जैसे let's say there is some earthquake in Nepal. So India is going to help. Non-reciprocity मतलब होता है कि India is not expecting that you will also be helping me in my problem. ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे लेकिन हम उम्मीद नहीं रख रहे. अगर आप चाहो तो मदद करो, अगर नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, so that's called as non-reciprocity. So we will take the hand, initiate it, the friendship, है ना. If you want, if you return it back, it's very good. ठीक है, तो एक चीज ये था. दूसरा था, no South Asian country should permit its territory to be used against interest of another South Asian nation. South Asia मतलब यही South Asia कहते हैं. That's South Asia. I have taught it in the paid classes. South Asia, Southeast Asia, Central Asia, West Asia, East Asia. These terms I have taught in the paid classes, right? है ना. तो एक चीज ये है कि साउथ एशिया में कोई भी अपनी टेरिटरी को दूसरे के अगेंस्ट नहीं यूज करेगा. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ कंट्री इज लेट्स से देयर हैव बीन एलिगेशंस दैट पाकिस्तान हैव बीन यूजिंग इट अगेंस्ट इंडिया फॉर टेररिज्म एंड ऑल. सो दीस थिंग्स शुड नॉट बी हैपनिंग, शुड नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स. यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरवीन नहीं करेगा. ओके, देन रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. मतलब होता है कि बॉर्डर में कोई घुसेगा नहीं इधर उधर, मतलब समझो ना. सो नो वन शुड बी इंटरफेयरिंग इन सम अदर्स बॉर्डर और इन देयर एरियाज. ठीक है, they should settle their disputes via bilateral negotiation. यानी multilateral negotiation नहीं. मान लो for example if there is dispute between India and Nepal, so that should be solved between India and Nepal. It should not be talked at some let's say SAARC or UN. वहां जाके बात नहीं होगी. कोई भी अगर आपस में दो मुल्क में प्रॉब्लम है तो आपस में सॉल्व कर लेंगे, कहीं और तीसरी जगह जाके नहीं सॉल्व करना है, कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना है. Okay, so bilateral negotiation means that. Okay, so that is what the Gujarat doctrine was. तो चूंकि आ गया तो मैंने पढ़ा दिया. Just have an idea. अब देखो he's saying, देखो actually what happened was, 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया का, एक 1974, एक 1998. So 1998 में 26 जनवरी को फ्रेंच प्रेसिडेंट केम टू इंडिया, और उसके कुछ दिन बाद आई थिंक मई में 1998 में व्हेन द अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, पोखरान 2 टेस्ट हैपेंड. ओके, तो ये वो इसी के बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो आई मीन फ्यू मंथ्स लेटर, I mean 26 January 1998, French president came. French president at that time was Jacques Chirac, came to India as a Republic Day guest, and few months later in May, I think 11 मई था या कुछ 14 मई के आसपास, 1998, the second nuclear test of Pokhran 2 happened. Yes, that is what is being talked. इसके ऑपरेशन को क्या कहते हैं? Can anyone tell me what is the name of operation which happened in Pokhran 2? कोई बता सकता है? Waiting for it. ठीक है, थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप न्यू दिल्ली एंड पेरिस हैव बीन अ ट्रेडिशन ऑफ जॉइनिंग ईच अदर्स नेशनल डे परेड्स. यानी देखो जैसे चिराग साहब आए थे रिपब्लिक डे गेस्ट में, है ना. देन यू कैन सी 1980 में भी जैसे अनदर प्रेसिडेंट जिस्कार्ड, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, ही केम इन 1980. निकोलस सरकोजी केम इन 2008. फ्रैंको होलांडे केम इन 2016, है ना. प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज द चीफ गेस्ट. तो दोनों कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट जो है एक दूसरे के मतलब रिपब्लिक डे परेड या किसी परेड में जाते रहे. ठीक है, जैसे रिसेंटली पीएम मोदी विजिटेड बास्टाइल डे, है ना, सेलिब्रेशन.
So Bastille Day happened on 14 July. I hope you are aware. 1789 को the beginning of French Revolution starts from Bastille Day and all. Yes, very good. मैं ये पूछ रहा था, ये पोखरान 2 कौन सा ऑपरेशन है? पोखरान 2 इज ऑपरेशन शक्ति. मैंने सब पढ़ाया है, सब बता रखा है. I have taught these things. And what is Pokhran 1? Operation Shakti. Yes, Manu and Gauri is right. Very good. Okay, so that is what is being talked about. So while the purchase of defense overshadowed the outcome of any of these big visits and all, so defense equipments खरीद रहे, like we will be buying some more 26 Rafale jets and other drones and all, है ना? इसी सब की बात हो रही है. तो ये जेक्स चिराक है when he visited on that is what is being talked about, है ना? जो अभी बता रहे थे कि 26 जनवरी 1998 को he was the French president who came to India and all for Republic Day. फिर एक बार क्या हुआ कि हाँ, would have been nothing in comparison to Chirag's visit in India in 1976. अभी बता रहे हैं कि 1976 में भी आए थे जब इंदिरा गांधी imposed emergency. I hope you are aware. So he came even during the emergency as well. ठीक है. So I hope you are aware. इंडिया में emergency लगी थी 25 जून 1975 till 23rd March 1977. ये था ना emergency का period. Okay, so during that also he came. Jacques Chirac came and all, who was the Prime Minister of France, saw no reason to cancel his visit, and in December he came for Paris Conference on International Economic Cooperation and all. Yes, Operation Smiling Buddha is Pokhran 1. Very good. बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है. India is not a part of which of the following grouping? Your options are MTCR, NSG, Australia Group, Wassenaar Arrangement. ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इस चारों में से इंडिया किसका मेंबर नहीं है? राइट नाउ एक्चुअली दिस टॉपिक इज मेंशन इन दिस एडिटोरियल, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट. बताइए एनीवन? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग ओनली 8 लाइक्स. 30+ लाइक्स ले जाओ. नो वन इज रिस्पॉन्डिंग. India is not a part of NSG, Nuclear Supplier Group. देखो India had signed, I think 2016 के आसपास we signed Missile Technology Control Regime. Technology short में लिख दिया Control Regime. So India is a part of it. Nuclear Supplier Group, India is not a part of it. Australia Group, Wassenaar Arrangement, दोनों India part है. In fact, India is the president of this or head of Wassenaar Arrangement. It took the charge on 1st January. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये एनएसजी वो वाला एनएसजी नहीं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाला नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है. तो इंडिया अज्यूम द चार्ज ऑफ वासेनार अरेंजमेंट ऑफ 1st जनवरी. ठीक है. जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. तो व्हेन इंडिया गॉट इट्स वेवर ऑन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, देखो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया मेंबर नहीं है. ठीक है. बट स्टिल व्हेन इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील हैपेंड, इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील हैपेंड इन 2005. हियर इज द फोटो. यू कैन सी मिस्टर मनमोहन सिंह एंड जॉर्ज बुश. So India was supposed to get important nuclear things or nuclear products from USA, and since India is not a member of NSG, how can it get it? So NSG gave a sort of waiver, यानी exception दिया इंडिया को कि ठीक है आप member नहीं है, you are not a member of NSG, but still we are giving you a sort of exception. ठीक है. So NSG waiver was given, and it was France who was instrumental in helping India getting it. France का काफी बड़ा रोल था NSG में वेवर मिलने में. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इंडिया इज गेटिंग द न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑल फ्रॉम यूएस एंड ऑल. ठीक है. सो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हैपेंड इन 2005. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, देयर इज अ क्वेश्चन. इट वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर? 1991, 1974, 2008, 2005. व्हाट इज द राइट आंसर? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. व्हाट इज द राइट आंसर? Nuclear supplier group was formed in the year. So it was formed in as a response to India's first nuclear test. ठीक है. देखो B is the right answer. देखो अगर आप पढ़ोगे ना, इसी में विकिपीडिया में ही लिखा हुआ है. NSG was found in response to India's nuclear test in May 1974. अब देखो, अब आप इसका आंसर बताओ. Yes, B is the right answer. Yes, आदित्य, धनंजय, राम, शमिस्ता, जागृति, प्रिया, you all right. और ये मैंने देखो यही क्वेश्चन है, ये मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया भी था. द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 1974. तो कौन सा था? देखो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इसी को हम पोखरान 1 कहते हैं, है ना. सो दिस हैपेंड इन 1974. ये पोखरान 2 को हम लोग ऑपरेशन शक्ति कहते हैं. दिस हैपेंड इन 1998.
ठीक है, ओके। 1974 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, 1998 ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी टाइम। सो ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 बता रहे हैं, तो ये वाला होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इन 1974 NSG वाज फॉर्म्ड, ठीक है। और अभी जो ऑथर डिस्कस कर रहे हैं वो 1998 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि 26 जनवरी को फ्रेंच प्रेसिडेंट केम एंड ऑल। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। हाँ, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया भी था और एग्जाम में आए भी, लोगों को हेल्पफुल भी हुआ। सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग दीज न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट। PM Modi's visit to Paris seeks many of the same shades of partnership. India's Foreign Secretary 𝗟𝗏𝗀𝗀 pointed out that despite dramatic visuals of violent protest, PM Modi not hesitated to even once in planning his visit and all. देखो क्या हो, yes, I hope you are aware there were some sorts of violence happening in France and all. Still PM Modi decided to visit there. दूसरी बात है कि ये हुआ था that European Parliament asked India to act promptly to end Manipur violence. So this was also at that time in the news. But still PM Modi decided to visit. That is what the author writes, quoting Foreign Secretary of India, Mr. 𝗟𝗏𝗀𝗀, his Foreign Secretary of India. Okay. Okay. Yes. Now, since we are talking about European Parliament, question तो बनता है ना कि it is located where? Your options are Belgium, France, Netherlands, Germany. कहाँ पर है ये? यूरोपियन पार्लियामेंट, जो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, ये कहाँ पर है? Where do you find this? What is the right answer? देखो, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना, मेन हेडक्वार्टर, कहां आपको मिलेगा? इट इज इन बेल्जियम और कैपिटल का नाम है ब्रसेल्स। सो ब्रसेल्स इज द सिटी, कैपिटल सिटी। वेयर डू यू फाइंड दिस? ठीक है, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, सो द राइट आंसर इज फ्रांस, ठीक है। सो दिस इज, यू शुड बी नोइंग इट। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसेल्स में है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रैटसबर्ग फ्रांस में। दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग हाईलाइटेड कि फ्रांस में ही यूरोपियन पार्लियामेंट था जिसने आस्क इंडिया टू एक्ट प्रॉम्प्टली टू एंड वायलेंस, एंड पीएम मोदी वाज सपोज्ड टू विजिट द फ्रांस, सेम कंट्री, ठीक है। हालांकि सिर्फ फ्रांस का इसमें रोल नहीं होता है, मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट में सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। थोड़ा सा मैंने घुमा दिया इस बार, but you should be knowing it because it is in the news. Strasbourg, France, है ना, it has administrative offices in Luxembourg and all. पार्लियामेंट कमेटी जो है वो बेल्जियम ब्रसेल्स से बैठती है, लेकिन जो मेन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर है वो स्ट्रैटसबर्ग फ्रांस में। यू शुड बी नोइंग इट। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन बेल्जियम, बट द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इज स्ट्रैटसबर्ग फ्रांस, ये याद रखिएगा। और चूंकि ये न्यूज में, इसलिए इट बिकम्स स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 705 मेंबर्स है वहां पर एंड ऑल। ये इसकी फोटो आप देखो, ये तो है, ठीक है। और ये आई होप ये यूरोपियन यूनियन का ये है, फ्लैग है एंड ऑल, ठीक है। ये डिफरेंट कंट्रीज का छोटा छोटा फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, सो दैट्स, यू शुड बी नोइंग इट। हाँ, यूरोपियन पार्लियामेंट इज इन फ्रांस, यस मानू, दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग। देखो ना, स्ट्रैटसबर्ग लिखा है ना, स्ट्रैटसबर्ग फ्रांस, ठीक है। ओके, यस। Okay, let's move on. On a major geopolitical stage, his combination of non-interference and non-alliance plays an important plays into France's approach towards PM Modi's government's visit on UK war and all. अब देखो, इसमें ये इतना जानना नहीं है। When Ukraine-Russia war is happening, we have a sort of a policy of non-interference and non-alliance and all. ठीक है। Although, I mean, जैसे जब भी resolution आया, whenever a UN resolution came condemning Russia, we actually abstained. Most of the cases में India has abstained, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो कि नॉन इंटरफेरेंस टाइप थिंग समथिंग, है ना। ओके, सो दैट इज दैट फ्रांस को ऑथर्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन विद मेक्सिको एंड ऑल, ठीक है। तो जस्ट हैव एन आइडिया। इमैनुअल मैक्रोन हैज ओन स्टांस हैज बीन मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ही हैज कॉल्ड व्लादिमीर पुतिन मेनी टाइम्स, तो कई बार उनको फोन पे बात हुई है। इनफैक्ट इमैनुअल मैक्रोन हैज सेड दैट ही वुड बी ट्रैवलिंग टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समझते हो? Brazil, Russia, India, China, South Africa summit is going to happen this year in August, ठीक है। कहां होने जा रहा है? साउथ अफ्रीका में, ओके। सो फ्रांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, but French President Emmanuel Macron has said that if he is invited, he will surely go there. अपनी बात रखने के लिए, है ना। So to make his case, मतलब अपनी बात रखने के लिए, that is what is being talked about here, ठीक है। Okay, in the strategic sphere, France announced publicly that it disapproves NATO plus partnership. हाँ,
I hope you are aware they have given the concept of NATO plus, जिसमें NATO countries would be there and some other countries would also be there like Japan, Australia, New Zealand, South Korea and even India. बट ये कोई एक ऐसा दिस इज एन इनफॉर्मल टाइप अलायंस, इसमें ऐसे कुछ नहीं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है. दिस इज जस्ट नाटो प्लस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ मोर सिंबॉलिक अलायंस, ठीक है. बट स्टिल मिस्टर एस जयशंकर हैज सेड वी आर नॉट, नाटो इज नॉट अ टेम्पलेट दैट अप्लाइज टू इंडिया. तो अगर आप हिस्ट्री में जाओगे सिंस 1947 टिल नाउ वी हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस, नॉट बीन अ पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस, ठीक है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट कि हम लोग मतलब जो है कभी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट वगैरह नहीं रहे, ठीक है, कभी नहीं रहना, मतलब नाटो की तरफ रहे ना यूएसएसआर की तरफ, नेवर, है ना. सो दैट इज व्हाट इंडिया स्टैंड हैज बीन. इन फैक्ट इंडिया वाज फॉलोइंग नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड ऑल. हाँ, यस गौरी, राइट. हाँ, फिर एक है सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन करके, ठीक है. इसमें ये थोड़ा सा क्रिटिकल आर्टिकल है, क्रिटिकल ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड ऑल. सो इसमें क्या पढ़ना, इसको आप अपने से पढ़ लेना. दिस इज टॉकिंग अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड्स इन तमिलनाडु मिनिस्टर्स हाउस एंड ऑल, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू सेइंग. अब यहाँ पे चलते हैं. पुश फॉर जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस द लॉ. सो अब ये समझना ये क्या होता है जीएम मस्टर्ड. देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ओके ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. So this is a branch of biotechnology. इसमें क्या होता है कि जीन में एडिटिंग करते हैं. आप इस तरह समझ लो, जीन अल्टरेशन और जीन एडिटिंग इज डन इन द सीड्स. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बीज में जीन एडिटिंग करते हैं. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द रिजल्टेंट क्रॉप इज कॉल्ड एज जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. सो द वन हु सपोर्ट्स दिस आइडिया दे से कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्लस वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है. They say that it becomes pest resistant, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा उसमें. Okay, so that is what the support is. So the example, the best example which has been implemented till now is only one. BT cotton को implement किया गया इंडिया में, बाकी किसी को भी अलाउ नहीं किया गया till now. Okay, now BT stands for Bacillus thuringiensis. This is a sort of a bacteria, soil bacteria. उतना डिटेल नहीं जाना, but just have an idea. So this was introduced, and when it was introduced, India was importing cotton, and now we are having huge productivity of cotton. ठीक है, so it is successful, कह सकते हो आप कि introduction of BT cotton in India is considered as to a large extent very successful. It has increased the productivity in India, which is a very good thing for us. We can also export now. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि this is not eatable. कॉटन को खाया तो नहीं जाता वो कपड़ा पहनने वगैरह के लिए, बट एज फार एज ईटेबल्स आर कंसर्न लाइक बीटी ब्रिंजल इज देयर, अभी इसको अलाउ नहीं किया गया. फिर जीएम मस्टर्ड जिसकी की बात हो रही है ना. ओके, अब ये सब में क्या है कि दिस इज ईटेबल है ना, खाने के वाला चीज है. सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली मोर कॉशियस बिफोर गिविंग परमिशन टू दैट. कॉटन तो नहीं ना कि पहनने का ड्रेस है, ये तो खाने का. इफ देयर इज सम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, इट विल हार्म द पीपल, इट मे कॉज डिजीजेस एंड ऑल. And that is why we have to be extremely cautious while giving permission to that. ठीक है, so इसी की बात कर रहे हैं. herbicide tolerant है ना, लिखा ना है. mustard stands between GM crop and Indian farmers and all. So so environmentalists, कुछ environmentalists ने petition वगैरह भी डाला है. So they have filed the petition in the Supreme Court regarding it and all. ठीक है, इसको transgenic crop भी कहते हैं, transgenic crop. ये सब वर्ड अगर आए तो घबराना नहीं, ठीक है भाई, GM crop and all. Okay. The insertion of mixed GM crop expert states that ordinarily would not found. तो इसको पढ़ लेना, मैंने आपको अंदर आइडिया दे दिया. Higher yields would be there, less affected by actually pest and all, उसे है ना. अब इसमें इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं ना. हाँ, like for example, अब जैसे environmental scientists, politicians have asked probing questions about the safety, efficacy है ना of the GM food. तो क्या सेफ है कि नहीं इंसान के लिए खाना वासा क्रॉप, या उससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा. Okay, so there is a committee, what we call it as Genetic Engineering Appraisal Committee. Genetic, तो यहाँ पे लिखा होगा Genetic Engineering Appraisal Committee. नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं हाँ यहाँ पे है ना. Yes, here it is. This is Genetic Engineering Appraisal Committee. ये पहले परमिशन देती है. Like for example, let's say अगर GM crop का है, GM mustard है,
So first of all, it needs permission or approval from Genetic Engineering Appraisal Committee. अगर इसने approval दे दिया, okay, then it will go to Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And the final approval is with Ministry of Environment, Forest and Climate Change. यानी finally ministry का पूरा approval हो जाएगा, तभी introduce किया सकता है. Then only it can be introduced in India. Okay, तो till now final approval सिर्फ BT cotton को ही मिला है अभी तक. ठीक है, so just have an idea about it. Okay, is it clear? ठीक है, तो इसी की बात करें, that is what the question of this is कि whether it should be allowed or not. तो आप अपने से पढ़ लोगे, आप समझ जाओगे कि that is what is being talked about, है ना. So थोड़ा सा history वगैरह पे भी जा रहे हैं, BT cotton and all. Okay, that is what about it. साइड में एक आर्टिकल था, कॉमनवेल्थ गेम्स will struggle to be financially viable. I hope you are aware. देखो 2026 में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स was supposed to happen in Victoria, which is in Australia. But now they have backed it. I mean, they have backtracked it. They have decided not to continue with this. ठीक है, तो लोगों ने कहा, देखो आप देखो, to withdraw the hosting 2026 Commonwealth Games has come as a mighty blow to the sporting movement and all. So they have decided to withdraw it, है ना. इस तरह का न्यूज आ रहा था, because they are saying कि they have to spend a lot of money and all. ठीक है, तो let me show you. Here is India, this is Australia, और ये वाला आपको मिलेगा, this is Victoria. ठीक है, so in 2026 Commonwealth game was supposed to happen here, but they have decided not to continue it, not to conduct it because of heavy expenditure. खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोग बता रहे. ओके, और यहाँ पर है इंडिया में, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, आई थिंक 2010 में ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट एज वेल. ओके, ठीक है, सो इसी को बात करें कि दैट इज कंसिडर्ड एज सॉर्ट ऑफ लूजिंग द क्रेडिबिलिटी एंड ऑल. लोगों की क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी ऑस्ट्रेलिया की, दैट दे हैव अर्लियर सेड यस वी विल बी कंडक्टिंग इट, नाउ दे आर सेइंग नो. Okay, now it's saying that yes, uncertainty would be there and it will disappoint the Indian sportsmen also, because they have won in the past and they are very much energetic to play again and all. That is what is being talked about. ठीक है, authorities who misconstrue authority. Misconstrue मतलब होता है misinterpret, गलत interpret करना. That is what. So this author is actually criticizing actually the enforcement directorate and all, that he's saying that it has become police and all. तो यही सब उनके author लिखा है, तो आप पढ़ लेना. We have discussed it. Enforcement directorate has power under PMLA, then Foreign Exchange Management Act, then we have Fugitive Economics Offenders Act, है ना. So he's saying, I mean, according to the author, he's saying that PMLA actually, I mean, this is now being used as a police agency, enforcement directorate. That is what he is saying. तो इसी के बारे में, it becomes very difficult. It has power of civil court and all under PMLA section 50 and all. Okay, he's quoting a lot of judgments, इतना detail नहीं जाना. And however, Supreme Court held that ED authorities are not police officers. He is quoting the judgment of Supreme Court in this regard. ठीक है, so he is now quoting Mr. Jaswant Singh, the then union minister, and he said कि I mean, not interested in the responsibility of acting as a policeman. ठीक है, तो ईडी का मेन काम जो है not acting as a policeman है. ये सब उसमें जा रहे हैं, इतना डिटेल नहीं जाना. ठीक है, so he's talking about these cases and high profile cases, and these are high profile cases in which enforcement directorate is there. Okay, cases against the senior ministers, politicians, and so just have an idea about that. So he's saying, unfortunately of late ED's power have been discharged in effective pre-trial arrest. Pre-trial arrest मतलब केस चलने से पहले, I mean the trial is still happening or the trial is yet to start and ED arrests the people. That is what he is talking about. फिर he is talking about this, हाँ, caged parrot. So CBI को caged parrot कहा था, किसने कहा था? Who called it? So a judge of a Supreme Court, later who became the Chief Justice of India, in 2013, Justice R.M. Lodha called CBI a caged parrot. उस टाइम पे बहुत मशहूर हुआ था 2013 में. So he is former Chief Justice of India. Justice R.M. Lodha. R.M. Lodha committee भी बनाई गई थी. You know this R.M. Lodha committee regarding IPL से related एक committee बनाई गई थी भी बाद में जब when he retired. Parrot can't fly free till set free and all. So he once called CBI as caged parrot when he was the judge of Supreme Court and all. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए. टर्म्स है, हो सकता है पूछ दें कि who called it as caged parrot, CBI and all. So that's Supreme Court. ठीक है, just have an idea about it. India UAE deal to trade with rupees, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. We have discussed it that recently PM Modi was on a visit to UAE. Here you can see PM Modi and here is UAE Prime Minister.
यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, है ना। सो क्या चीज के लिए, देखो एक दो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो रूपी दिरहम ट्रेड होगा ना, so that is this will strengthen our rupee and dirham and all, ठीक है। so that would be good for us, है ना, ट्रेड करने में। so here is India, this one is UAE, we have discussed these things, है ना। तो इंडिया एंड यूएई ट्रेड जो है $85 बिलियन का था लास्ट ईयर 2022 में, एंड लास्ट ईयर वी साइन सीपा, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई, ये सब पता होगा आपको, है ना। so these are the things being talked about. UAE was India's third largest trading partner, and India was UAE's second largest trading partner. तो ये सब चीजें बेसिक आइडिया होना चाहिए, just have an idea about it, है ना। Then NPCI, National Payment Corporation of India, has launched UPI, है ना। UPI, you know that, like Paytm transfer and all, है ना। so ये बाहर की कंट्रीज में भी अब नाउ, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, कतर, यूएस, सऊदी, यूएई ऑल्सो, है ना, यूके, हांगकांग, अब इतनी सारी जगह वर्क करेगा वो, ठीक है। so that is what you should be knowing about the UPI, okay। so these UPI things will be working there as well, है ना। Supreme Court Collegium recommends 4 advocates as High Court judges. so कितने मेंबर कॉलेजियम होगा यहाँ पे, how many member are there in this collegium, कितना होगा बताइए, मेंबर्स बताइए, to recommend the appointment of High Court judge। हाँ, तो देखो ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, देखो ये पूछा था एक बार एलेट में, यही, दिस इज एलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यतो धर्मस्ततो जया, टेकन फ्रॉम भागवत गीता। इसका मतलब क्या होता है, where there is righteousness there is victory, है ना, या where there is justice there is victory, where there is righteousness, जहां सच्चाई है, आप समझ दो, ईमानदारी है, there is victory, है ना, ओके ओके। नहीं 5 मेंबर नहीं होगा, देखो फिर आप लोग गड़बड़ा दिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फॉर रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, 3 member कॉलेजियम for the appointment of a Supreme Court judge. The Supreme Court Collegium comprises of 5 judges. For appointment of a High Court judge, the Supreme Court Collegium comprises of 3 judges. तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ, देखो इनके वेबसाइट पे रेजोल्यूशन डाला है, देखो रेजोल्यूशन ऑफ 18 जुलाई, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट एज जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। अब इस पे जाओ, तो मैं इस पे क्लिक किया, ये मिला, है ना। सो दे आर नेमिंग इट 2 names ऑफ लॉयर्स, है ना, ये 2 नाम है लॉयर का। और अगर इसकी लास्ट में जाओगे तो देखो इन तीनों का सिग्नेचर है, सीजेआई एंड 2 other जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, इन दोनों का सिग्नेचर है। Oh yes, Mayur Jaiswal, I'm very happy to see this. You are in MNLU Mumbai, completed 1 year, and huge credit goes to your beautiful lectures. I'm very happy and congratulations that you are studying in a good prestigious college. And yes, I think this will be motivation for others also. Yes, okay, तो ये clear हो गया guys, है ना। 3 judges और 5 judges का concept clear हो गया ना। I hope it's very much crystal clear, है ना। Okay, yes. Now this the another one is, Mayur, are you attempting CLAT this year? आप दोगे क्या फिर से? Okay, now अब इसमें जाओ, अपोजिशन पार्टीज वोट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस एंड कॉम्बैट हेट्रेड एंड ऑल, तो ये सब मैंने डिस्कस कर लिया, इंडिया अलायंस एंड ऑल, है ना, वही है, तो दैट वी हैव डिस्कस्ड इट। यस, ओके। साइलेंस फ्यूल स्पेकुलेशन, चाइना's फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग्स, अब इस पे इतना नहीं टाइम देंगे, कुछ रूमर्स वगैरह, इसलिए वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना किंग गैंग्स इज नॉट seen on media and all, पिछले 23 दिन से नजर नहीं आ रहे हैं। so there have been some news and all, rumors of affair and all, तो अभी ये चूंकि वेरीफाइड न्यूज नहीं है, सो विल नॉट बी कमेंटिंग ऑन दैट, बट एक जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए दैट किंग गैंग इज इन द न्यूज, फॉरेन मिनिस्टर, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। Yes, just open YouTube and this video popped up, thought I should thank you. Okay, Mayur Jaiswal, I'm very happy to see this. Yes, hard work pays off. Yes, it becomes a very happy for me, I mean very motivating for me also, कि जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है and they say कि yes, worked hard, I mean your hard work pays, so this is a motivation for me also, and that I hope कि others will be also getting motivation from that, है ना? So keep on following these classes, that would be very beneficial for you all.
Okay, so thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.